गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग होना चाहिए क्योंकि रात के अभी बज रहे हैं 1:30 और वी आर लीविंग फॉर बैंगलोर। आज दुविधा थी कि शुड वी यूज द कार और द बाइक, बट सुपरमेटिव चॉइस हुआ। हवाएं तो तेज चल रही है बाहर, but I hope there is no rain. There should not be any rain as per the prediction. लेकिन अगर बारिश आ गई तो आ गई, अपन रुक के रेनकोट पहन लेंगे और क्या करेंगे। तो काफी रात हो गई है, गेट खोलना पड़ रहा है। So it is saying 10 hours 35 minutes और लास्ट जब इसे थैंक यू लास्ट जब इसे ऑन किया था तब वाईफाई था घर पे। आई एम यूजिंग द वायरलेस सॉरी ऑफलाइन मैप्स। एक लंबा ट्रैफिक जैम, दिस इज 2 घंटे 20 मिनट लगभग वी हैव कम आउट एंड NH44 इस बार एक अलग सा रूट दिया है। इस बार ORR का पैरेलल वाला रूट नहीं दिया हमें, पता नहीं क्यों। दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट रूट बट तो पता नहीं किस वजह से था, एक लंबी जैम लगी थी। सिग्नल तो मुश्किल है बट हो सकता है कि सिग्नल ही है। फिर से सारी गाड़ियां अटक चुकी हैं। सो गाइस, द टाइम इज एग्जैक्टली 3:30, so that's 2 hours 1 minute since the start. So 2 घंटे पकड़ के चलते हैं। 1:29 को स्टार्ट किया था and we have done 101 kilometers. ट्रिप ए रीसेट नहीं हुआ था, ट्रिप बी रीसेट हुआ है, तो ट्रिप बी को ही देख रहे हैं हम। So 101 kilometers, 2 hours and the chai break is over. Abhi we will continue. So we have 480 kilometers left. So ये low beam, high beam, these are the fog lamps that I am using. ये HGC के हैं, they are rectangular and that's the high beam. The HGC के rectangular fog lights हैं and it costs me around 16-17 के बीच, 1600-1700 के बीच पड़ा। फिटिंग वटिंग हो गया तो फिटिंग वटिंग के साथ थोड़ा ज्यादा पड़ा, बट आई थिंक दैट्स हैदराबाद कॉस्टिंग, तो ज्यादा टेंशन नहीं है उसका। 80-85 स्पीडोमीटर, सो GPS 80 तक गए and there has been no problem at all regarding wind. The helmet is doing a fantastic job of streamlining the wind और ये जो अपना विंडशील्ड निकाल देने के बाद बफेटिंग चला गया। बॉडी पे कोई खास प्रेशर नहीं है टिल 85 90 शायद रीच किया था एक बार, पता नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 90 तक कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रेशर ऑन द बॉडी एंड नॉइज तो भाई बहुत 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 कम हो गया है। दैट नॉइज में ईयर प्लग्स लगाने के बाद भी जो नॉइज आता था, अभी आई एम डूइंग 66, तो सिमिलर नॉइज है।
अभी तो सही मायने में वी कैन से गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह होने वाली है एंड द स्काई इज गेटिंग lighted slightly, but it's a very grayish blue color because I think there are clouds. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6. It's 6 o'clock in the morning and I just had some breakfast from this place. We have done 257 kilometers, that is out of 575, so 580, so 260, 580, 320 is still remaining. Yes, 324 kilometers is still remaining. And that's it. We will start off now. With the morning greeting us. There are clouds in the sky, but बारिश is not expected. क्लाउड्स तो हैं आसमान में, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है और बारिश का प्रेडिक्शन भी नहीं है. सो लेट्स सी क्या होता है. और रात का टाइम बारिश होने से ज़्यादा तकलीफ होता है. डे टाइम इज स्टिल ओके, यू नो, यू कैन हैंग ऑन समवेयर. एस्टिमेटेड टाइम इज 11:49 टू रीच. तो अगर बारिश ज़्यादा हो गई और कहीं रुकना पड़े तो भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि इट्स ओके है, टाइम है हाथ में, डे लाइट है. रात को बारिश होती है अंधेरे में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. बारिश में चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और रुक के भी कहाँ रुके अंधेरे में. तो if you, by the time you find a decent place to stop with some minimum lighting, you are wet. तो तभी क्या फायदा. और वही रेनकोट की वजह से ठंड थोड़ी कम लगेगी. क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ जा रहे हैं, रात को बारिश हो गई है तो यहाँ पे रुक नहीं सकते ना. यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बंदा सो रहा है, अंधेरा है, समझ में भी नहीं आएगा कि कुछ है. तो यू हैव टू कंटिन्यू. अंधेरे में रेनकोट निकालना मुश्किल हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं बैग के अंदर. तो रात तो निकल गई है और बड़ी अच्छी तरह से निकली है. 1:30 वी स्टार्टेड फ्रॉम होम. देयर वाज अ टी ब्रेक एट 3:15, 3:20. 101 किलोमीटर हुआ था. उसके बाद 5 o'clock in the morning we were done around 217 kilometers. उसके बाद रोड कंडीशंस आपको दिख ही रहे हैं, became bad, so the vehicle congestion was experienced. और डाइवर्शंस भी थे, सिंगल लेन हो गया था रोड, जैसे कि उस तरह का रोड बंद कर दिया, बीच में बैरिकेड लगा के इन दोनों को एक एक लेन बना दिया. तो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड. सो उससे स्पीड थोड़ी कम हो गई. 7:20 in the morning, 7:19 actually, so 1 minute remaining for 7:20, and a beautiful, cool, almost chilly, sunny morning over here. We are in Andhra Pradesh right now. I had just refueled. It's 109 rupees per liter. It's 109 rupees point change per liter. So it's 2 rupees more than what it is in Telangana. And that's Andhra Pradesh. So compared to Telangana, the roads in Andhra Pradesh are not that good.
this kind of potholes are there, which is like it feels like somebody has carved it out of the carved it on the road, and the driving is also not that good. But okay, very good roads in general, and decent traffic sense also. The only thing is कुछ दूर जाने के बाद पॉटहोल्स की जो है श्रृंखला शुरू हो जाती है और फिर वो चली जाती है, तो अभी जा चुकी है। एंड रिफ्यूल हो गया है 12 लीटर से थोड़ा ज्यादा, 12 भी समझिए, में 3 से 14 किलोमीटर चला है, मतलब 26 का माइलेज मिल रहा है। और आफ्टर सनराइज इसे मैंने 100+ पे भगाया, तो शायद वहां माइलेज काफी कम हो गया है। 28 का माइलेज जो है वो 26 में आ गया है। तो देखिए, नजारों को एंजॉय कीजिए, हम भी करते हैं। थोड़ी देर में चाय के लिए रुकेंगे, एंड I will then switch my prescription glasses to sunglasses. So दोस्तों, 354 kilometers done and 227 remaining. और एक रेड बुल ब्रेक लिया था इधर, मस्त हवाएं चल रही है यहाँ पे। सामने शायद साड़ियाँ सूख रही है, देखने में ऐसा लग रहा है कि फूलों का बगीचा है। There is a farm on this side, and अच्छा लग रहा था। It is 7:47 in the morning, and चलो आगे चलते हैं। अभी इरादा तो है कि 100 किलोमीटर में रुकेंगे, लेकिन आइडियली एनर्जी ड्रिंक के बाद जो है ना, थोड़ी भूख लग जाती है, तो अगर भूख लग गई तो रुक जाएंगे। 11:48 is the estimated time of arrival. 12 o'clock is the check-in. So we are still as per plan going good. एक स्नैक ब्रेक होगा, and that's about it. बाकी सब चाय सुट्टा ब्रेक ही होगा। सब इन द सेंस अभी कितना बाकी है, रुको, अरे बाबा रे, अभी इतना बाकी है 227 किलोमीटर। सो अगर 75 पे भी ब्रेक ले तो 2 या 3 ब्रेक होंगे। सो 227, सो 225 पकड़ते हैं। 25, 150 पे अगर एक ब्रेक लेंगे और फिर 75 पे एक लेंगे। चलो, लेट्स गो फॉर इट। वेदर इज वेरी गुड। अभी तक गर्मी का कोई एहसास नहीं है। हवा जो है वो शीतल है, लाइक आई वुड से इट्स कूल ब्रीज, एंड देयर इज नो सेंस ऑफ वार्मथ येट, and it is 7:49, 7:50, 10 minutes to 8. आइडियली 8 बजे जो हम लोग लद्दाख वाले ट्रिप में जा रहे थे, 8 बजे जान निकल रही थी गर्मी से। बट हाँ, वो मई का महीना था, एंड इट वाज एक्सट्रीम नॉर्दर्न इंडिया, तो देयर वुड बी अ डिफरेंस। वी आर हियर इन AP, तेलंगाना, कर्नाटका घूम रहे हैं, एंड it is the month of November, which is kind of, bang opposite to the weather expected. But हाँ, अच्छा लग रहा है। हेलमेट का वाइजर बंद ही रखते हैं, बिकॉज कीड़े बहुत हैं बाहर, बड़े बड़े टंग टंग करके आके लग रहे हैं हेलमेट पे, तो वाइजर बंद ही रखेंगे। एंड वी आर डूइंग अगेन 70+, तो बिटवीन 75-85 स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ।
एंड ETA जो है घर से जब शुरू हुआ था तो 11:28 था, बीच में 11:46 हुआ था, फिर 11:38 हो रहा था, अभी रेड बुल ब्रेक के बाद 11:48 दिखा रहा है, तो वी आर गुड। 12:30 तक अगर घुस गए तो जाके कपड़े वपड़े बदल के थोड़े फ्रेश होके अपना माँ का भोग ग्रहण करने जाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट लेके शाम को घूमने निकलेंगे। टुडे इज नवमी, तो नवमी का जो पूजा वूजा है वो सब देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो फूड, टी, वाटर का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा अभी, बिकॉज ऑल द शॉप्स आर ओपन। रात को भी कोई टेंशन नहीं था, 1:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काफी सारे ऑप्शंस थे। इट वॉज माई चॉइस दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू राइड ऑन बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग द नीड ऑफ स्टॉपिंग और हैविंग एनीथिंग, बिकॉज आई न्यू कि एक बार जब दिन आ जाएगा तो ब्रेक्स बढ़ जाएंगे, तो रात को खींचना आसान होता है ना, इट्स इजी टू पुल, यू डोंट फील लाइक स्टॉपिंग मच unless it is raining or you have any kind of discomfort either with the bike or yourself, तो बात अलग है। But ideally रात को you don't need to stop much and you also don't have the motivation to stop। अभी रेड बुल स्टॉप लिया, मस्त वेदर था, हवाएं चल रही थी, पेड़ के नीचे रुक गए। रात को वो सब नहीं होता। So coming to the Super Meteor, 3,500 kilometers is done and currently extremely satisfied with the bike. It is only performing better and better as time goes. So पिछली बार बैंगलोर आया था सुपर मीटियोर लेके, तब उसका 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर हुआ था एंड तब मैंने सस्पेंशन भी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग ही रखा था, विच वॉज द सॉफ्टेस्ट ऑन पेपर एंड that experience that I had was not very good. But then yes, I had the windshield also, which was probably 90% of the reason for a bad experience. फिर उसके बाद लोनावाला गए थे, उससे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हुआ था और अभी जो जा रहे हैं तो बहुत ही इवन बेटर एक्सपीरियंस हो रहा है। और एक बात मैंने नोटिस किया है, 100 की स्पीड में ना भाई कुछ हो जाता है इस गाड़ी को, एकदम स्मूथ, बटर स्मूथ हो जाता है। इट इज वाइब्रेशन तो है नहीं एट एनी स्पीड टिल 110 तक कोई वाइब्रेशन नहीं है। 110 से 130 के बीच में आपको पता चलेगा कि हाँ वाइब्रेशन नाम की चीज आ रही है। सो इट इज एक्सट्रीमली मैनेजेबल एंड आफ्टर 130 टिल 150 जो मैंने टच किया है पर्सनली, यस देयर इज द इंजन इज वर्किंग एंड यू नो, आपको पता चलता है कि इंजन जो है वो मेहनत कर रही है, काम कर रही है। 80-90 पे जो वाइब्रेशन है 100 पे वो भी चला जाता है, एकदम बटर स्मूथ हो जाता है। केवल राइट फुट ब्रेक में हल्का सा आपको पता चलेगा कि गाड़ी में कोई इंजन है जो चल रही है, बाकी एकदम इलेक्ट्रिक बाइक ऑलमोस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज फुट पेग्स आर क्लोज टू द इंजन, तो फुट पेग्स में आपको पता चलेगा कि देयर इज अ इंजन रनिंग। हैंडल बार्स में आपको कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, देयर इज नो वाइब्रेशंस। सो आई लाइक द होंडा हाइनेस, which is probably the smoothest engine
स्मूथेस्ट नॉन कम्यूटर इंजन इन द मार्केट। तो हाइनेस चलाने के बाद इफ आई एम सेइंग कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है, मतलब इट इज रियली गुड, बिकॉज अब अगर क्लासिक 350 से आके बोलते हो वाइब्रेशन नहीं है, या फिर केटीएम से आके बोलते हो आप वाइब्रेशन नहीं है, तो ठीक है, दोज आर वाइबी ग्रफ इंजन्स। बट if I'm riding a Honda Highness and then I feel that no vibration तो नहीं है ऐसा कुछ, that really means something. I had tested तब सुपर मीटियोर का दूर दूर तक कोई विचार नहीं था माइंड में। I just wanted a little more torque and little more power as compared to the Honda Highness. तो X440 टेस्ट किया था। I like the bike, enjoyed the test ride in the city, little bit of open roads, loved that bike. But वो टेस्ट राइड खत्म होने के बाद जब हाइनेस में बैठ के घर आ रहा था, I really didn't want to change the Highness to that. बेसिकली वो हाइनेस को एक्सचेंज ऑफर में देके फिर X440 लेने का प्लान था, क्योंकि 350 और 440 बाजू बाजू में डजंट मेक सेंस। देन आई वेंट फॉर मेनी 1.5-2 साल से गाड़ियों का टेस्ट राइड ले रहा हूँ, लेकिन हर टेस्ट राइड के बाद जब आके हाइनेस चलाता हूँ घर वापस आने के लिए डीलर के पास से, तो नहीं यार, नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। What is it that the Highness can't do? डबल राइड में गुरु दरबार कर लिया कोलकाता से पूरा ले लद्दाख सर्किट कर लिया, उमलिंगला कर लिया डबल में विथ लगेज 1 महीने का। तो रियली कोई बाइक ऐसा हो नहीं रहा था कि जो लिटरली हाइनेस को रिप्लेस कर सके। तो फाइनली द KTM 390 केम 2025 मॉडल, लेटेस्ट जो भी चल रहा है, तो उसका 390 का टेस्ट लिया, मजा आ गया। क्या गाड़ी है भाई, ये एडवेंचर बाइक है, टॉल स्टांस है, 825 mm का सीट है ना। 825 mm सीट ऑन ए स्पोर्ट्स बाइक would be ideally taller than in a adventure bike, because एडवेंचर बाइक के सस्पेंशन ऐसे बने होते हैं कि जब राइडर बैठता है तो वो थोड़ा दबता है। सो 825 ऑन एडवेंचर बाइक इज अ डिफरेंट फील देन 825 ऑन अ क्रूज और स्पोर्ट्स और स्ट्रीट बाइक। ठीक है, तो मजा आ गया। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि राउडी सा इंजन था यार, बिहेवियर राउडी नहीं था। It is much more mellowed down than the Dukes, but उसका ये आवाज बहुत था and vibrations were there। 390 सिंगल सिलेंडर है, मानता हूँ, but जा भाई तू भी जा। बहुत देर से पीछे से डिस्टर्ब कर रहा था ये K41 MA 7470, बहुत देर से। He was just trying to get in the whatever space is available, even though it is not there. Very irritating and dangerous at the same time. So even now he is trying to play those games. See his attitude. So KTM was vibey. तो पहली बार तो बहुत ही अच्छा लगा and I was like, let's go for it man. And then second test ride में वो जो नयापन चला गया, I was really critical in the sense अब मुझे खरीदना था। I had gone with ready to pay the deposit for the KTM, और rather डाउन पेमेंट देके लोन वगैरह की बात करनी थी। तो मजा नहीं आया। somehow मेरे को लगा कि इतना वाइब्रेशन जब इस बाइक को लेके मैं 4 घंटे 5 घंटे 12 घंटे चलाऊंगा,
तो मैं थक जाऊंगा, मेरा माइंड थक जाएगा, बॉडी थके ना थके। बॉडी थकेगा नहीं, गाड़ी इज वेरी वेरी गुड, यू कैन राइड इट फ्रॉम सनराइज टू सनडाउन एंड यू विल बी रेडी टू राइड बैक आफ्टर ब्रीफ रेस्ट। गाड़ी इतनी अच्छी है, लेकिन वो जो उसका वाइब्रेशन और उसका साउंड था ना, वो मेरे को बिल्कुल पुट ऑफ कर दिया। एंड देन चलता रहा बिकॉज द होंडा एट 100 इट इज देयर, सो फाइनल लैप 100 पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद 100 में अगर आप हो और आपको क्विक ओवरटेक करना है एंड यू हैव पिलियन एंड लिटिल लगेज, इट विल नॉट डू दैट। बाय द टाइम इट रीचेस 110, आपका ओवरटेकिंग का पूरा सपना जो है वो पुराना हो गया। तो आई वांटेड a quick acceleration at 100. If I'm cruising at 100 or 90 and I need to quickly accelerate to get out of a sticky situation, I should be able to do it. Because कोई भी गाड़ी, कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, जो भी हो, जीप हो, आपका जो क्रूजिंग स्पीड है ना, उस स्पीड में आपको इमरजेंसी ब्रेक और इमरजेंसी एक्सेलरेशन अवेलेबल होना चाहिए। सो वो टॉप स्पीड नहीं होना चाहिए क्रूजिंग स्पीड, और होंडा का टॉप स्पीड ऑलमोस्ट इज दैट, बिकॉज पीपल डू 110, 120, 130, बट पता नहीं कैसे करते हैं, लेट जाते हैं गाड़ी के ऊपर, स्लूप में जाते हैं, कुछ भी करते हैं। वो नहीं बनी है उसके लिए। तो दैट इज व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट बाइक। तो काम नहीं था कुछ, केटीएम लेने के टेस्ट करने के बाद मूड ऑफ हो गया, और कोई मार्केट में बाइक नहीं है जो मेरे को लेना है। सॉरी, मार्केट में कोई बाइक नहीं है जो लेना है। बाजू में उसका रॉयल एनफील्ड का शोरूम था, तो आई वाज लाइक भाड़ में जाएगा, तो स्क्रैम 440 ले लेते हैं। स्क्रैम 440 का टेस्ट ड्राइव लिया, डिट्टो होंडा वाली फीलिंग आई, बोरिंग। हाँ, one reason that I wanted to have another bike was that Highness is very boring. It is so smooth and it is so capable that it is downright boring. तो बट Highness मेरे को छोड़ना नहीं था, मेरे को और एक इंटरेस्टिंग एंगेजिंग बाइक चाहिए था। Highness doesn't engage you so much as the Royal Enfields do or the KTMs do. तो रखा था सुपर मीटियर, मैंने कहा चला के देखते हैं भाई, इसकी तो सीट हाइट कम है, चलाने में क्या है, 650 का मजा लेते हैं। तो भाई टेस्ट ड्राइव लिया, तो विद इन 2 वीक्स बाइक जो है मैंने डिलीवरी ले लिया। एक टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, 2 या 3 टेस्ट ड्राइव लिए, बट पहले टेस्ट ड्राइव पे ही समझ में आ गया कि आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड्स कि भाई एक मोटरसाइकिल है जो किसी कोने में छुपी हुई है, और वो ही मेरे लिए बनी है। बस मैं वहां उस बाइक पे बैठा नहीं हूं अभी तक, या तो नजरअंदाज कर दिया हूं, या तो ध्यान नहीं गया उस तरफ किसी वजह से। तो सुपर मीटियर वाज द बाइक व्हिच वाज जस्ट वेटिंग फॉर मी, एंड उसके बाद से एवरी राइड हैज बिकम बेटर देन द प्रीवियस वन। So 97 kilometers to go and we are in Karnataka, as was confirmed by the Dosawala. One thing that I have noticed is KA cars are slightly more bullying on the road. I wouldn't say it's aggressive, they are more bullying. So ठीक है, every state has its own personality and culture. So yeah, as I was saying that 97 kilometers are remaining, and 1 hour 57 minutes is the estimated time to arrive, and 11:59 a.m. is what it is saying. What also I have noticed is that if I constantly maintain a speed of 75 plus, 77, 78, 80,
then the time decreases to by 10 minutes in about 50 kilometers. So 96 kilometers I will only take a break if I'm feeling drowsy, because I just had a masala dosa and a chai, and the masala dosa masala I didn't find very good, so I just had the dosa part. So if at all I feel drowsy, I'll have to stop for a energy drink. I'm not carrying Red Bull. I usually don't carry Red Bull. I carry the brand Monster. I like the taste. It's sweet, but it's a huge can. The quantity is much more than Red Bull. Slightly less expensive, but the taste is good, but the quantity is too much. So this time I tried something called Hell. They are around what, 60 bucks, 60 or 80 bucks, I don't remember. The watermelon flavor was khatta khatta watermelon, not bad. And there is Classic, which would probably be the standard that has been set by Red Bull. The Kia factory on my left, it spans multiple kilometers, because I think the entire manufacturing and assembly happens here, and there are a few vendors also who have their factories alongside. So other than Japan, Mahindra, this is the only other four-wheeler factory that I have seen. I have seen the Mahindra factory in Japan while doing a project for Mahindra and Mahindra. The Thar, the erstwhile version 1 Thars were being built there, and since then I always wanted to have a Thar for myself. About 60-70 kilometers from Bangalore, on this road, while coming on this direction, came across this beautiful view. It looks like due to some dam or something, entire project went underwater. So there are a lot of birds over here. Over there you can see there are white flocks of birds, lots of greenery. This was the entry gate, and that was probably a sit out or something, but the entire fencing and the entry gate and the approach to the gate as well as that thing is completely submerged, but it looks all the more beautiful that way. Bhaiyon Bahno, it is 8:49 on the 3rd of October 2025. सुबह के 8:50 होने वाले हैं, 49 मिनट हो रहे हैं, और हम निकल पड़े हैं बैंगलोर से टू गो बैक टू हैदराबाद. बैंगलोर में आया था टू मीट माय सिस्टर एंड हिज स्मॉल किडो, एंड नवमी का पूजा भी देख लिया, होम भी देख लिया. We had some great food last evening at a place called Glen. Biryani खाए हम, which was awesome, beyond awesome. और खूब मजे किए. It was a nice experience. ये है कर्नाटका के लोग जिसकी वजह से कर्नाटका बैंगलोर बदनाम है. पता नहीं देर से निकले या ज्यादा सोए, भगा रहे हैं पागलों की तरह. Anyway, वो उसका प्रॉब्लम है, हम उसको अपना प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे.
और बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है और ठंडी है. आई थिंक द टेम्परेचर शुड बी नाउ अराउंड 24-25. धूप निकल चुकी है तो 25-26 तक तो होगा, जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स में इज क्वाइट प्लेजेंटली कूल. वेरी गुड क्वालिटी स्टेट हाईवे. दिस इज SH104 एंड काफी अच्छा क्वालिटी का है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टच NH44, जो कि हमें मालूम है कि इट्स वन ऑफ द बेटर हाईवेज ऑफ इंडिया. Asking me to keep left. Maybe we'll merge after this, just to be doubly sure. I have to stay on the service road now. Hyderabad will be right. So even if I had taken the main highway, I would have had to get out of it now. Just FYI. And that is where I have to take a left, take a U-turn, come back and take a right, so that this junction doesn't have any signals. There is no crisscross. There you go. So that was not my Hyderabad line of direction. This is. Very beautiful road and very beautiful landscape all around. The skies are beautiful, the weather is beautiful, the road is always beautiful. So it's a nice synergy of positivity. I am currently doing 80s in the speedometer, which is translate to 77, 75 to 78 of the GPS, and that speed is very comfortable. I am making good time. At the same time, I am not, neither me nor the bike is getting fatigued, given that we have been riding for almost 40 plus minutes. And the same experience was while coming from Hyderabad to Bangalore, maintaining mid-high low 80s. The fatigue factor was almost not there at all. एक unplanned break we gave, saw this beautiful location, so had to stop for some photographs. बहुत ही अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव लग रहा था. ऐसा कोई सुपरलेटिव कुछ, there is nothing superlative object here, but the sky, the landscape, the road, everything was looking good. So I decided to stop, and now we will continue. So a little about the gears that I am using.
biking gears, luggage, all that. So a little about the gears that I am using. I am using a Solace jacket. This is my second jacket. The earlier one was not Aspida, but it has that star logo. If I remember, I will tell you during this conversation, otherwise I'll put it at the bottom of the screen. That was a black jacket with CL2 level 2 protection. It did not have chest protection, and it did not have a winter liner. It had a internal rain liner, zippered. So that was the jacket, and I was using regular knee guards earlier, and now I am using the Solace jacket. It has got level 2 protection, and it has got chest protection also, back, chest, shoulder and elbows, and it has an external rain liner which has already died. It was not of a very good quality, so for the rain I am using the cycling raincoat that you get in Decathlon. It comes with a hood and it does not come with pockets. It has got zippers in the place of pockets, which is for air inflow. Very good quality, even at the speed of 80-90 with the proper rain happening. The water does not penetrate. It may penetrate from the neck area because there is a gap over there and there is a lot of pressure at that speed, but water doesn't enter or penetrate. It's pretty dry and pretty reliable. And this Solace jacket has got an internal zippered winter liner, which is extremely effective. It was enough in most of Ladakh. Only when riding at the high passes where there was snowfall happening, I used an external fleece jacket. Otherwise, that was enough. And yeah, raincoat is very helpful in places like Ladakh because it does not let the chilly wind penetrate, and that's it. The inner liner, the raincoat, and this regular jacket was good enough. For the lower, I am also using a Solace pants. So these are summer compatible. The pant has a lot of mesh. It has, it's very comfortable. We have done rock climbing, not a rock climbing, hiking up the rocks, and yeah. So in Bhuvangiri we climbed the entire 400 feet or 400 meter. 400 meter would be 1200 feet. I don't know. It's a very huge monolithic rock. So we climbed it up, and I was wearing the biking pants and my biking shoes, which I will come to later. And then we rappelled down from there. And at no point did I feel encumbered or overweight because of the shoes or the pant. That was an excellent test to the pant. So this has an outer rain cover also, which I don't use. I similarly use a Decathlon rain pant, which has an integrated shoe cover. And again, the quality and the protection is very good. I wanted to buy the Rhinox set, but these protect so well that buying the Rhinox set is unnecessary expenditure until this the life is over for these. They are so good. And for biking shoes I have 2 pairs, 3 actually. For local city rides going 100 kilometers or close by, I use my Woodland, which is semi-high ankle boots and leather, and
has a very good sole and is very strong. For long distances, if I just want to keep things easy and relaxed, and it is less than 500 kilometers, just for the sake of decision making, I have a pair of paratroopers which I bought for $1,800 online Amazon. It does not have a steel toe, but dropping a medium-sized brick onto the toe will not hurt your toe. It's good enough. It is high ankle, so it protects against your shins, specifically when you are trying to hold the bike on an incline against the footpegs. And what I'm using currently, that is 500 plus and multi-day touring, I use the Agra Shoe Mart ASM. Now this cost me $5,000 and it is waterproof, and it is stuck and stitched at the sole. I have done Guru Dongmar, I have done Ladakh, 1 month of rigorous rain and sun and your Ladakh terrain and whatnot, and I had zero need to repair it. I just looked at it and saying, all good, let's continue using it. And this is a proper biking boot with steel toes, metal at the ankle and stuff like that. And for the gloves, I'm using this Royal Enfield gloves. I bought it for $1,200 online. They are very good for summer, and it has got a little bit of leather here and some Kevlar here. I wouldn't say the protection level is L-par, but I would certainly say that any gear that you are using, that will only help you against abrasion and mild knocks. If your bones have to be broken, then they will break. No riding gear will help you to stop you from serious damage if you have a head-on collision, or you come under the wheels of another vehicle, or if the bike is on top of you and putting pressure on you between the tarmac and the bike, you are sliding, things will break, your fingers will break, your ankle will break, your bones will break. It's not a helmet which helps from impact. The beauty of the riding gear is when you fall, and if you plan your fall well in those few seconds, single digit seconds that you get, you will have one is you're avoiding impact by falling in a particular way, by leaving your vehicle and moving off, being independent. The slide, the abrasion is what your gear will protect you from, which is the most painful part. See, any experienced biker will have thought about falling, will have imagined the scenario of crash in his mind multiple times, in his or her mind multiple times. So when a crash actually happens, then if you have done enough homework in theory, you will leave your vehicle and you will go to a safe direction and slide to a stop. You will avoid impacts, hard impacts. Okay, so that slide is what needs protection. You go splat head on a car's bonnet, nothing is going to protect you. Your helmet, yes, nothing else is going to protect you. But if you know that you are going to hit the car, and a moment before you actually hit, you jump off the bike and you slide, then your riding gear quality matters, and they will certainly protect you. You will stand up and walk off, literally. So that is where the gloves, the elbow, the hip, all those, the back protections come in effect. So guys, if you are wearing riding gear, you are not Iron Man, you are leather man. Hard impacts are not going to be protected by those, so do not to go overconfident, and please keep playing different scenarios of crashing, and in the different scenarios how you will eject yourself from the vehicle and just slide independently. That's an unfortunate accident over there. Probably the driver dozed off
or there was an overtake scenario. Somebody might have pushed him off, or the driver might have dozed off. He just went and hit the divider. So that's the riding gear. For the helmet, I'm using an entry level MT. It's MT Melkor. I think it is the Hummer series. Melkor is the design. It has pin lock, but I don't use the pin lock because they are quite expensive. 2500 or something, or 1100. 1100 is the replacement of the visor. 2500, 2000 is the pin lock. So what I use is the imported stickers that you get, and that has worked very well in the mountains during the rain and the winter. So those stickers are the ones that I keep ordering. It takes a lot of time to reach, so I pre-order and keep stock. What else? For the mask, I use the tubes that you get in Decathlon, and I use those proper masks that come for bikers, right? Which has a slit near the eye. It covers your head, ears, mouth, nose, neck. Kind of a balaclava, but made of neoprene. And for the winters, I have a winter balaclava that is taken out, shown the sun, and again kept back unless we are really going to cold places. And that's it. I use cotton suede socks in my shoes. I use dry fit, tight fit, full sleeves t-shirt with lot of durability. Again, that is a cycling one. And I have the three types, from very thin with lot of mesh to medium to a really tightly woven thick one. So depending on the temperature that I will be facing, I use those. Yeah, I use a swimming costume as my foundation garment because boxers are cotton, so they tend to get wet, and you're with sweat or rain, sweat mostly, and your skin tends to get tender. So a swimming costume has a cotton inner and a neoprene outer. It dries like magic, and it doesn't have any seams. It gives a decent amount of compression, which against your boxers will not be able to give you. So that's what I use. I had used the gel padded cycling shorts, but see, the way your bum contours on the cycling seat, the gel is positions for that. So that is more or less, it contours to the side, but on a motorcycle you are straight. So the gel actually was unhelpful, because the gel and the gel was not entirely flat, right? It was in two places for the cycling seat. So the edges of the gel, non-gel part and gel part, had a difference of height, and that was very painful. I have cut off the stitches, removed the gel, and just the fabric part of the cycling shorts I use as a backup, and a pair of swimming costumes is what I use as my primary innerwear, with dry fit fitting t-shirt, but not so fitting that my armpits get scratched. Armpits are comfortable. Rest of the hand, shoulders and the torso is tight fit, and the jacket over that. That's about the gear. I am using a almost 4-year-old Cason C6. Yes, I am using a Cason C6 as the camera, which daylight and normal shooting is very good. It has wind noise depression, but you can hear that it is not as good as the more expensive ones, but it's doing well, and I will use it to the end of its life, and then probably go for I will not go for a GoPro, but I might go for something with a better wind noise
cancellation, because as you are watching this video, you know that wind noise is not something that is really, pleasant. And motorcycle, I don't do any modification. From my very first motorcycle that I owned, which was a Suzuki Samurai 100cc 2-stroke, and my dad's two-wheeler was a Lambretta. My brother's first bike was a Bajaj M80. He has a CBR now. This is my 18th or 19th bike, because last year I had the 17th bike, and then this is the second bike that I purchased. I have never done any modifications. I literally, I almost detest, I won't say hate, but I detest modifications of any kind to any vehicles. Accessories, yes. So it has the charging cum mobile holder, which has been handed over by my previous bike, so it's inherited. I have a saddle stay and a rear rack. That's it. End of story. Yeah, the fog lamps. I have covered it with homemade covers. One of my raincoats died. Not raincoats, I would say one of my bag luggage cover died. So I used it to create this. Almost waterproof, very much water resistant fog lamp covers. For luggage, today I am using the tank bag. I have not kept it here. I have tied it on the rear seat, and I am using the Rhinox waterproof bag, the grey one that you get, which is a tall one. You roll it and then it becomes a horizontal circular thing. You must have seen it in the photographs by now. So that's 100% waterproof, and the surface is very smooth. It's very easy to clean it after your ride. You don't always have to cover it with a dust cover or a muck cover. For the saddlebags, I usually use Rhinox Dry Stack. That has a external semi-hard flap. It's a soft luggage. It is water resistant but not waterproof. It has an inner bag of fluorescent green. You fill the inner bag, and that is 100% waterproof. I have not had things getting wet. See, when I say talk about the rain, or I talk about durability, I am talking about 30 days of being on road from Kolkata to Ladakh and back, and unbelievable rains on the Uttaranchal Expressway and the Agra-Lucknow Expressway. The rains were so hard that our bikes were pushing against it, and we could feel the strain the bike was going through to push through. It was so hard rain. So that is the benchmark. So my luggage has never got wet on the Rhinox Dry Stack. The luggage has never got wet on the Rhinox waterproof tail bag. I also have a Guardian Gear tail bag. Now that is not waterproof, and it doesn't have an inner waterproof liner either. What it had is an external cover, and things have got wet in that. So since it is an external cover and it's a tail bag, we have to first cover it from under using one cover, and then cover it from the top, overlapping the seam of the cover from down, and then tie it up. That is 100% waterproof. Things did not get wet there. What happened is at one time the top cover was put first and the underneath cover was put next. So the underneath cover's seam was exposed and water went in from there, and things got wet at the bottom of the bag. So it was more of a human mistake. But using that tail bag is something that I avoid as much as possible, because covering it against the rain and dust is a big task. It's an additional 15 minutes of task which I don't want to do, because the Rhinox Dry Stacks, put it up,
If you don't use the mud cover, your bag will get dirty. If you use the mud cover, your bag will remain clean. The things inside will always remain dry. Your Inox tail bag always dry. So it's a plug and play. But the guiding gear is not plug and play. It needs some kind of setup. So that's about it. That's the gear. So we are inside AP now. थोड़ी देर पहले ही we crossed the border, and Karnataka has bougainvilleas with pinkish and reddish flowerings, and AP has got slightly different Karvandi or something, I think the name is, which has yellow flowering. Very interesting that they take pride in building a median which would also be a way to, identification or significant to which state it belongs to, the road. So very nice. So the yellow flowers look equally bright and soothing, and so does the pink and the red ones. As long as there is a lush greenery protecting the glare from the other side and making the road so much more beautiful. Look at the beauty on that side. It's little far, but hopefully I wish I had switched on the 2.7K mode. So thoda clear aa jata, close to the horizon. Hopefully at full HD it will still be visible to you. It's beautiful. Looks good. So 7:30 का टारगेट है. अभी 64 किलोमीटर बाकी है. तो मैं मिडिल ऑफ द रोड ब्रेक लिया बिकॉज सनसेट अच्छा लग रहा था देखने में. सनसेट नहीं, सनसेट होने में टाइम है, बट अच्छा लग रहा था. तो चाय पीने का मन है. तो 65 किलोमीटर बाकी है. 64. तो प्रोबेबली 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद एक चाय ब्रेक ले लेंगे, या फिर अगर मजा आएगा तो 65 खींच लेंगे, क्योंकि वीकेंड ट्रैफिक और शहर के नजदीक आने के बाद जो नॉन हाईवे ट्रैफिक है वो थोड़ा बढ़ गया है. एंड हाईवे ट्रैफिक, ऑन द हाईवे द व्हीकल्स they behave very nicely, but as they come closer to the destination, as we come closer to the city, the cars who behave nicely on the highway tend to get a little anxious to reach and beat the city traffic. So उनका ड्राइविंग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, और सिटी के आसपास वाले गाड़ियां जो हैं वो भी आ जाते हैं हाईवे पे, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. उनका पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहता है. तो a constant 80-85 will be very difficult, stressful, and more than anything else dangerous. Enjoy Hyderabad traffic. I don't know. Normally ORR के बाजू से लेके आके ऑफिस के रास्ते में आके उतार देता है. Due to the floods and all, maybe this time while exiting Hyderabad also it gave me a different route, and while entering Hyderabad also it is giving me a different route. This route doesn't go close to ORR at all. Maybe it quickly bisects it from underneath, but usually it's a parallel to ORR, and then a little bit of ORR is overlapping. All that didn't happen while going to Bangalore, and it is also not happening while coming back to Hyderabad.
थोड़ा मेरा रफ राइडिंग पकड़ा गया, लेकिन ट्रैफिक में क्या करें, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी ने तकलीफ नहीं दी। सो आई वुडंट कॉल इट रफ राइडिंग, आई वुड गिव इट अ नेम कॉल्ड क्विक राइडिंग। सो दैट्स माय सोसाइटी। आई जस्ट हैड माय कॉफी और सामने जो सिग्नल दिख रहा है वहां से यू टर्न करके सोसाइटी में घुस जाएंगे। ये अभी प्लान है। अरे सिग्नल ऑरेंज हो गया, लाल हो गया, रुकना पड़ेगा। यू टर्न तो फ्री होता है, अगर गाड़ियों ने जगह दिया है तो अपन यू टर्न एग्जीक्यूट कर लेंगे। थैंक यू। So that's it, the last 50 meters. So Renuka, my classmate and my Rakhi sister called, उसकी मॉम का बर्थडे है। रेणुका जिसका नंबर यहाँ पे इमरजेंसी में लिखा हुआ है, उनकी आंटी का बर्थडे है, तो शी कॉल्ड अप। क्योंकि उसने कहा कि सामान लेके सीधा आ जा ऊपर ही, तो जूते वूते तो निकलेंगे नहीं। देखते हैं। ये अपना आई विल बी पार्किंग एट माई फ्रेंड्स गैराज बिकॉज माई गैराज इज लीकिंग एंड रिपेयर होते होते सारे जो गैराज के छत थे, बाय द टाइम अपना ब्लॉक का नंबर आया तो बारिश आ गई, इस वजह से वो रिपेयर नहीं हो पाया। पहुंच गए।